like reactions of third period element. If you recall, हमने last time ग्राफ्स कुछ बनाए थे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के जो हमारे सिलेबस में है, कंडक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में था, and then we had this melting point graph of third period elements, and then we started with the reactions of third period. So reactions में we just completed with the first reaction, that's reaction of third period elements with oxygen. और अब second reaction third period element का we can actually start with an important one, that is with water. हमने पहले ऑक्सीजन से किया था और नंबर 2 पे विद वाटर, और जिन लोगों के नोट्स कंप्लीट हैं लास्ट लेसन के वो इससे आगे कंटिन्यू कर दें, एंड दोज हु हैव नॉट attended or seen the recording of the first lesson, they should leave at least 2 full pages on both sides and then write inorganic notes separately. Otherwise अपनी नोटबुक के लास्ट कोई 20-30 पेजेस आप इनऑर्गेनिक लिख सकते हैं वहाँ पे, और लूज पेजेस पे लिख लें. So I'll just list down the elements of third period again. We have sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. इसके बाद argon है, but we normally don't discuss argon in the reactivity of the elements. बस मैं इन्हीं को लिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर जो जिनके रिएक्शंस हो सकते हैं. Okay, so when we react these elements with water, तो अब आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके रिएक्शन आपने O level IGCSE में पढ़े हुए हैं. लाइक सोडियम का रिएक्शन विद वाटर इज वन ऑफ स्टूडेंट्स फेवरेट रिएक्शन अदरवाइज. और उसके बाद लेट मी ऐड फ्यू मोर स्टूडेंट्स. इसके बाद मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है इन कोल्ड एंड स्टीम की फॉर्म में. एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज इट्स covered or protected with the layer of oxide. Silicon is a giant covalent molecule, doesn't react. Phosphorus non-polar है, नहीं react करता. Sulfur नहीं करता. Chlorine reacts. तो इन तीन सारे elements में से only 3 elements like magnesium, sodium, and chlorine could react with water. तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया. Let's start with sodium. अच्छा, जो लोग क्लास में एंटर होते हैं दे शुड यूज देयर ओरिजिनल, अपने नाम से एंटर हो, सो दैट व्हेन आई टेक अटेंडेंस तो यू आर नॉट मिस्ड आउट. अच्छा देखिए, व्हेन सोडियम इज ट्रीटेड विद वाटर, it would actually form the sodium hydroxide, and beside that we get hydrogen gas. You know this reaction, if you remember, sodium is in solid state. Inorganic में मैंने बताया था कि you need to know the state symbols of elements, but you write them once asked. NaOH would be aqueous, base is strong alkali, hydrogen is gas. And when we balance this equation, we'll put 2 with NaOH, sodium, and with water perhaps. So that balances your equation. अच्छा, बस इस रिएक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो मैं इसके साथ नीचे लिख देता हूँ आपने, बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ योर आईजीसीएसई सिलेबस ऑल्सो, और वो इधर ए लेवल में भी आपसे काफ़ी पूछते हैं, तो आपको याद रखनी है. एंड देन रिमेंबर व्हेन यू आर आस्क्ड ऑब्जर्वेशन, तो उसमें आपने ये लिखना होता है कि व्हेन यू पुट सम मेटल और एलिमेंट इन वाटर फॉर एग्जांपल, तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली सी. तो अब जब आप वाटर ले लेते हैं बीकर में at room temperature and you put some sodium metal piece into it, so very first thing you see is that the metal will float on the surface of water. We'll write what we see. So metal floats, that's the part of observation. And then again try and copy these notes side by side so that when I'm done with the space, तो फिर मैं next slide पे जाऊंगा. तो या तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख लें, लेकिन प्रेफरेबली यही है कि बिकॉज आई एम राइटिंग स्लो, यू कैन कॉपी इट side by side. So first thing we see is that the metal floats. Second, it starts darting on the surface. Dart मतलब होता है ऐसे गोल गोल फिजिंग करना शुरू हो जाता है, just like water bike. So darts, and in the process it catches yellow flame because the reaction starts, and this reaction is exothermic reaction. I mean, it gives out heat, so it catches flame. And then we see this beside yellow flame,
we see uh, like metal dissolves finally, bubbles at time we see of hydrogen gas, and then pop sound. अच्छा, अब अगर आप नोट करें तो I've written quite a few observation here. तो अब ये जो है ना, तो इसमें से जो ऑब्जर्वेशन आपने पेपर में लिखनी है, एटलीस्ट यू आर सपोज्ड टू राइट 3 ऑफ देम. तो देखें इसमें मेटल फ्लोट्स, फ्लोटिंग इज एन ऑब्जर्वेशन, डार्ट्स मूविंग राउंड एंड राउंड सर्कल्स में, कैचिंग येलो फ्लेम, येलो लिख लें इधर. All that is part of observation. Then we see bubbles of hydrogen gas coming off the beaker surface, and then finally we hear pop sound. तो ये इनमें से at time they ask you to write 2 or 3 observation, but otherwise आपने जब लिखनी है तो try and put 3 observations there. इसको आप नोट कर लें, कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन एक्चुअली अनम्यूट योरसेल्फ और इसमें पूछ सकते हैं आप जब मैं इस पे पढ़ाता हूँ. तो आई डोंट हैव दिस माइक इशू. सेकंड इज दिस मैग्नीशियम्स रिएक्शन विद वाटर. तो मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ. एक सेकंड में. समवन इज एंटरिंग विद अ वेरी वियर्ड नेम. लेकिन सर जी बेटा. सर आपने एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस और सल्फर के नीचे क्रॉस का साइन बनाया, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं दे डोंट रिएक्ट विद वाटर फॉर सम पर्टिकुलर रीजन. तो मैं साथ साथ उनको मेंशन कर दूंगा, बट दीज आर नॉन मेटल्स एंड अदरवाइज दे डोंट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशंस. सो इट्स लाइक के थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, the ones which react include sodium, magnesium and chlorine, and then the ones which don't react, उनका भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्ट नहीं करते. Because in सर so many, क्लोरीन भी तो नॉन मेटल है, वो क्यों नहीं रिएक्ट करता? वो करेगा ना बेटा. नॉन मेटल है, वो रिएक्ट करता क्यों है? इसलिए कि इट्स एन एसिडिक गैस. नॉन मेटल होना काफी नहीं है. आई मीन इट हैज दिस तो वाटर से एसिडिक बिहेवियर. रिएक्ट होके HCl बन जाता है. एसिडिक गैस है ना, तो एसिडिक गैस तो वाटर से रिएक्ट करेगी और फॉर सम अदर रीजन एंड एवरीथिंग. ओके. अच्छा, अब देखें मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, इट हैपेंस इन 2 डिफरेंट कंडीशंस. Like when magnesium reacts with water, तो either we take water in liquid state at room temperature, so this reaction will be very slow reaction and it will form magnesium hydroxide, and with that we get hydrogen gas. Magnesium hydroxide is not a highly soluble base, so you might write aqueous or solid at time with it in observation. Precipitate बनाता है. Hydrogen is gas. And when you try and balance this equation, you'll just put 2 with the water. So this reaction is with liquid water at room temperature. Like आपने एक beaker ले लिया, उसमें water आपके पास room temperature पे, and we just put a strip of magnesium into it. So अच्छा, the other thing is I hope you remember O level में पढ़ा था आप लोगों ने, group 1 metals are lighter, less dense than water. So sodium floats on water, right? It doesn't go and sink down. But बाकी जो metals हैं, when you put a piece of magnesium in water, तो it will sink in fact. And then we see a very slow stream of bubble here and there randomly. That is because of hydrogen gas. But this is a very slow reaction. So magnesium slowly dissolves, giving bubbles of hydrogen and forms this turbid magnesium hydroxide. थोड़ा सा muddy solution बन जाता है. But when you take magnesium and react it with steam, in fact, steam means के water in a hot state at high temperature in the form of gas, where this magnesium plus water would form, like steam would form magnesium oxide plus H2. ये reaction भी आप लोगों ने पढ़े हुए IGCSE में, as far as I remember, I know the syllabus that much. तो ये आपको याद रखना है. So when you're asked to show reaction of magnesium with water at room temperature, you'll make a base and hydrogen gas. But when you take water in hot steam form and we heat it as well, then we get magnesium oxide and hydrogen gas. And this equation is already balanced, in fact.
So at time they ask you के suggest how would you carry out this reaction in the lab, like magnesium को आपने steam से react करवाना है, तो how would you do it in the lab? इसके लिए we don't need any high tech operators or anything. आपने simple combustion tube बतानी है. मैं इसको नीचे draw कर देता हूँ. तो combustion tube is like a glass tube of about 1 meter in size, और उसको हम stand पे fix करके, तो we just put this magnesium powder, like you'll put magnesium powder in propylene boat, porcelain boat, और उसको हम heat करते रहते हैं साथ. And then from this side you'll pass steam, like water in hot state made by any source. You'll pass steam and it would react with the surface, on the surface with magnesium, and it will form magnesium oxide solid powder which will be left in the tube. This one is white solid, और इस साइड से हमें हाइड्रोजन गैस निकलती जाएगी जो आगे बन रही है. So if you're asked how would you carry out this reaction in the lab, so we'll simply say we pass steam over hot magnesium powder in a combustion tube. बस एक सेंटेंस आप लिख देंगे, ठीक है? Pass steam over hot magnesium powder in a combustion tube. So this thing actually will go for any reaction where you're reacting the metal with a gas. ठीक है ना? हर जगह जब आपसे वो पूछें how would you react a metal with a gas, उसको आप ऐसे बीकर में डाल के नहीं रिएक्ट कर सकते. We use this combustion tube. Its name is like combustion tube, but otherwise ये सारे इसी काम आता है कि when you want a gas reacting with solid. So I repeat again, those who have joined late, we are actually continuing with inorganic chemistry in online classes, ताकि हमारा parallel चलता रहे साथ साथ. इसमें in the first lesson, this is the second lesson of inorganic. The first lesson we done the graphs of third period elements. Then we started with the reactions of third period elements. We done one reaction was, first one was with oxygen, and the second reaction is with water. इसमें मैंने सोडियम मैग्नीशियम का रिएक्शन एक्सप्लेन किया so far. I've written the equations, I've written the observation for sodium because that's the one which is with more observations and asked a lot. मैंने मैग्नीशियम का रिएक्शन बताया वाटर से. It happens in two states, like when your water is in liquid state or when your water is in the form of steam. So you get different product. The difference is either hydroxide बन रहा है और इधर oxide बन रहा है. अब as I said कि it takes a lot of time to raise all this. आपने अगर नोट कर लिया है तो ठीक, अदरवाइज मैं फिर थोड़ा वेट करके आगे चला जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड विल कंटिन्यू विद एल्यूमिनियम ऑनवर्ड. इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ा कोऑर्डिनेशन का समटाइम मसला होता है. अब आप लोग उतनी प्रैक्टिस में नहीं है जितना 1-2 साल पहले थे ऑनलाइन में. तो अगर कोई नहीं लिख पा रहा, साथ साथ कैचअप करना मुश्किल लगता है, तो I'll send you the recording, आप उसको दोबारा देख लें आराम से. लेकिन नोट्स में ये चीज़ होनी चाहिए. I'll really be checking कि जी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक लिखी हुई है कि नहीं नोट्स में. So continuing further, aluminum does not react with water. अब इसकी रीजन आप लोगों को आनी चाहिए. So far from IGCSE, does not react with water. React? No, water. तो बता सकता है कोई कि why aluminum does not react with water? ये बताओ. It's unreactive. ये तो अंडरस्टूड सी बात है. आंसर कहाँ है इसमें? Why is it unreactive? Anyone else? Sir, it is difficult to complete its oxidation state of +3. No. सर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो आउटर लेयर होती है उसकी सूर्य. बिल्कुल, सिराज ने आंसर दिया. आई थिंक केमिस्ट्री इतनी समटाइम मुश्किल नहीं होती जितनी आप लोग बना लेते हैं. द रीजन इज दैट एल्यूमिनियम इज कवर्ड, लिखें अब इसको आती नहीं आप लोगों को, कोटेड विद एम्फोटेरिक नॉन पोरस लेयर. The oxide barrier.
layer of Al2O3. अब बीच में आंसर देने का फायदे कोई नहीं हो रहा ये this is like one of the element for no reaction with water, and this reason is asked repeatedly, and your answer must include that the aluminum oxide is amphoteric and it is non-porous as well, like इसमें से water vapors अंदर नहीं जाते metal में, so that's why aluminum oxide doesn't react. One question leads to another question, and online class में थोड़ा मैं reluctant हो जाता हूँ क्योंकि बच्चे उस तरह से सामने नहीं होते तो आंसर का आइडिया नहीं हो रहा होता. You guys try and tell me what is an amphoteric oxide? Anyone? Substance that reacts with both acid and base. Exactly. So it's like an oxide which could react with acid and base simultaneously. So it's amphoteric oxide. So oxides are like acidic oxide, basic oxide. I've said this earlier. A level maybe we don't have a chapter like acid, bases, salts, etc. तो अगर आप लोग उसको पढ़ लेंगे, कैचअप कर लेंगे from IGCSE acid base का chapter पढ़ लें अगर, तो it will really help you in inorganic chemistry. Now moving to silicon is a giant covalent molecule, covalent macromolecular structure, and giant covalent macromolecules do not react with water because water does not have enough polarity to break their giant covalent structure, therefore does not react with water. Water के साथ ही reaction की हम बात कर रहे हैं. And then phosphorus, P4 and S8, these are extremely non-polar molecules. And again, water has no affinity whatsoever with these two, and that's why they don't dissolve or react with water. But when it comes to chlorine, and chlorine is an acidic gas, Cl2. So an acidic gas is known to be forming acid in water. तो जब वो वाटर में आप ऐड करते हैं तो वाटर कैन क्रिएट इनफ पोलैरिटी ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल टू ब्रेक इट इनटू एटम्स एंड फाइनली मेक इट रिएक्ट विद इटसेल्फ. तो क्लोरीन एसिडिक है और रिएक्ट करेगी. इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है, Cl2 plus HCl, H2O, and that actually forms HCl solution, aqueous, and beside that we get another compound that's called HClO, that is hydrogen chloride. This thing is actually a kind of bleach, a bleaching solution, and a bleaching solution is the one which actually removes colors or decolorizes substances, so it removes color. ये जितने भी कोरोना के स्प्रेज मिस्ट फ्यूम्स इधर उधर जाते थे आप जब बिल्डिंग्स में या शॉपिंग मॉल्स में, तो एक टाइम पे इन बिटवीन दे स्टार्टेड स्प्रेइंग दिस मिस्ट ऑफ फ्यूम्स. That actually was this mixture of bleach, and it was thought it's an antiseptic or something, but technically it had no good effect on any sort of virus at all. तो वो बस अपना satisfaction के लिए लोगों पे spray कर रहे थे, फायदा कोई नहीं था उसका. So this is like the reaction of chlorine with water. This is otherwise balanced and would happen easily at room temperature. तो जब मैं किसी एरो पे हीट वगैरह नहीं लिखता तो it means it will be happening at room temperature. तो ये हो गया जनाब फर्स्ट रिएक्शन आज की क्लास का. जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स रिएक्शन विद वाटर, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन ओनली रिएक्ट. The rest of element in third period do not show reaction with water with some particular reasons. अब इसके सर बाद ये HClO क्या है? HClO हाइड्रोजन क्लोरेट. नाम नहीं चाहिए लेकिन मैं लिख देता हूँ. It is हाइड्रोजन क्लोरेट. That's a bleach. Chlorate. So there are different types of hydrogen chlorates, ClO, ClO3, ClO इस तरह से, लेकिन इस reaction में you get this HClO beside HCl solution, hydrochloric acid. अच्छा, जो third reaction है third period elements का, that is with chlorine, and that's much easier.
it happens at room temperature and doesn't have any observations as such. तो उसको अगर हम quickly कर लेंगे, उसमें सिर्फ equations बनानी है हमें. तो I'll go on the next page now. अभी थर्ड पीरियड एलिमेंट के बाद we have oxides of third period elements. उनके भी reactions हैं. फिर क्लोराइड का एक रिएक्शन है. तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शंस में the last one is reaction with chlorine. Reaction of third period elements with chlorine. अच्छा देखिए, when you react again these third period elements with chlorine, so these elements, if I list them again, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. So technically they all react, in fact, except maybe for chlorine, obviously, reacting with its own type. But sulfur के reaction syllabus में नहीं है. I'll try and still write its equation. We have sodium till phosphorus. इनके reactions हैं हमारे chlorine के साथ syllabus में. So they all react easily, quite fast at room temperature, and there is no particular observation as such, except sodium के case में we start getting some yellow flame or something, because this reaction is slightly exothermic even. So when NaCl is formed, it actually starts giving some heat out of sodium. So remember, whenever you heat a salt of sodium or sodium directly on the flame, अगर आप sodium metal ले लेंगे तो वैसे कोई नहीं करेगा, लेकिन if you take salt of sodium like NaCl and you bring it in the flame, तो you'll see the flame turns yellow. अभी भी अगर आप जाके क्लास के बाद किचन में if you take some table salt, rock salt, तो उसको अगर आप थोड़ा सा फ्लेम पे फेंकें तो you'll see the flame will turn yellow, and you might not do it in front of some elder, obviously, because हो सकता है वो आपको पनिश कर दें कि इस चीज़ का गुनाह होता है, लेकिन केमिस्ट्री में चलें थोड़ा बहुत गुनाह हम एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द sake of knowledge. So any salt having sodium in it starts giving this. If heat is there, we see yellow flame. Sometimes they ask you, what do you see during this reaction? तो we see this, and then sodium chloride formed is a white solid. इनके कोई कलर नहीं है. जो products यहाँ पे बनेंगे, they don't have any color, like white maybe, but not some specific color otherwise. Magnesium reacts with chlorine quite easily, again making magnesium chloride. Balanced equation already. Solid, chlorine gas, magnesium chloride solid. अभी बड़ा इस रिएक्शन में इतनी टेक्निकलिटीज नहीं है, तो आई रियली वांट कि आप लोग इसको जरा स्पीड में नोट कर लें मेरे साथ. Aluminum reacts with chlorine to make aluminum chloride, and again all these are like solid, and to balance this one out we'll put 2, 2 and 3 here. Then silicon's reaction is important. In fact, इसमें जितने भी ये products बन रहे हैं इनमें silicon and phosphorus to some extent is important, because इस केस में क्या होगा, जो product है उनकी states change हो जाती हैं. Like silicon plus chlorine will form silicon 4 chloride, SiCl4. To balance we'll put 2 with chlorine. So this one is solid. We almost hold silicon और उसके compound solid हैं, लेकिन not all of them. Chlorine is gas. The silicon 4 chloride SiCl4 is liquid. ठीक है, तो among chlorine reaction with sodium group third period elements, examiner typically picks this silicon, क्योंकि इसमें बहुत से students silicon 4 chloride को भी solid लिख देते हैं, तो it is liquid. Do not forget this. Or sometimes you're supposed to pick the correct equation. Like question could be, which of the following equation correctly represents reaction of silicon with chlorine? तो फिर आपने जब देखेंगे तो you'll find maybe all the 4 equations probably same. तो difference या तो liquid state of silicon chloride से निकलेगा, या फिर उसकी balancing ठीक नहीं होगी. I mean might not be shown balanced. आपने whole number से balance दिखाना है उसको. फिर phosphorus could react with chlorine quite easily, and that makes phosphorus 3 chloride, PCl3.
and that one is initially gas. जब ये PCl3 फिर क्लोरीन से मिलके PCl5 बना दे तो that is liquid, but इसको हम गैस ही लिखते हैं typically. Solid, gas and state balance करना है तो 2, 2 and 3. And then I said कि sulfur's reaction is not in syllabus, but the thing is कि question में examiner ने आपको खुद बता दिया कि sulfur reacts with chlorine to make this compound, and then says ये equation बना दें उसकी, तो उसको मैं खुद ही लिख देता हूँ, but I'll put this steric sign with the circle, meaning कि this reaction you're not supposed to memorize, but if it comes as it has come earlier, you'll be given the product and you will simply make the balanced equation. Sulfur plus chlorine makes this sulfur chloride gas, and its equation would simply be like S plus Cl2. Sulfur is solid, chlorine is gas, product is gas. तो अगर ये आ जाए तो you'll get the product. You simply write down the reactants and try and balance the equation. Balance करना तो stage पे सबको आना चाहिए. So this is like third reaction of third period elements, that is with chlorine. पहला first one was with oxygen, second अभी हमने आज किया water से, third chlorine से. Now if you see inorganic is almost this throughout, like जो आगे ये chapter थोड़ा बड़ा है इसका, but आगे दो chapter बड़े छोटे छोटे हैं, दो तीन reactions हैं उनमें. तो the only thing which will make inorganic chemistry difficult is if you do not revise these reactions, and revise as in you don't write them again and again at least 2-3 times on different days in rough notebook, pencil पकड़ के याद करके equations आप लिखें, balance करें. If you do it, then inorganic is easiest portion of syllabus. Otherwise अगर एक student को equation ही नहीं बनानी आ रही, balance नहीं करना आता, state symbols नहीं आते, it will simply become the toughest portion, because to be honest, it doesn't have too many deep concepts like हमने जो Hess law पढ़ा इससे पहले, for instance, or you know intermolecular forces हैं, shapes of molecules हैं, इस तरह के tricky topic, Maxwell Boltzmann graph, उस तरह की चीजें तो नहीं है इसमें, but equations हैं. इसको grip करने का एक ही method है, revise 2 or 3 times and then practice equations on rough pages. अच्छा, अब next इसमें we have the compounds of third period elements. तो टेक्निकली सेकंड टॉपिक हमारा ये बनता है, आप कह लें थर्ड टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक में ग्राफ्स थे, सेकंड में थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शंस, अब कंपाउंड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. As the name shows, any compound which has a third period element in it can be considered in this category, but we have only 2 in our syllabus. So we have oxides and then we have chlorides. Like अभी जो हमने क्लोरीन से रिएक्शन करा के कंपाउंड बनाए, those were like chlorides of third period element, and then oxides are like third period elements with oxygen. So इसमें oxides are more important, so we'll start with those. And for oxides, before we do any reactions, this is where IGCSE chemistry is needed. Acid basis salts वाला जो chapter मैं अभी कह रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि oxides में we'll see acidic, oxide, basic, amphoteric, all that will come again. So if you could revise inorganic acid basis salts from O level IGCSE before next class, तो आपको inorganic A level की भी थोड़ी आसान लगेगी. वरना फिर एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे कहते हैं सर inorganic नहीं हो रही, वो अब कैसे होगी 1-2 दिन में जब आपने उसके रिएक्शन ही नहीं याद किए हुए. अच्छा, इस टेबल में we'll list the physical properties of these oxides before we go to the reactions. तो इसके नीचे आप एक टेबल बना लें. It will be an oxide here. Like we'll put the oxide here, और निकल के इधर हम property लिख लेंगे और oxide इस side पे डालते हैं. So first one is like sodium oxide, फिर magnesium oxide, we have aluminum oxide, सारे elements के oxides. Then we have silicon oxide, silicon dioxide SiO2, we have phosphorus oxide P2O5, we have sulfur oxide SO2. क्लोरीन का ऑक्साइड हमारे सिलेबस में नहीं है, but I'll just list it here. You might see some random questions on oxide of chlorine here and there.
So this sign in inorganic chemistry, steric and circle, would mean that this thing is not in syllabus. It might be given in the question with enough information so that you can answer it. उसको मैं नोट्स में डाल देता हूँ ताकि फिर आप पेपर में एकदम घबराएं मत कि ये क्या आ गया. So for all these compounds, we'll write their states. So मेरा टाइम जो है ना वो हमारे पास 5-6 मिनट रहता है और इतने टाइम में इजीली ये टेबल फिल हो जाएगा. थोड़ा सा अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ तो कॉपी कर ले, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे. State, color, nature as in because these are oxides, so we'll go like acid, base, neutral oxides and all. और उसके बाद नेचर के बेस पे इनकी solubility. So these would be enough physical properties. Last row में technically कुछ में नहीं आ रहा. So I'll try and make it short and easy to memorize. In terms of state, अभी हमने reactions पढ़े थे. So all these are solid except the last two. So last two are gas, and the rest are all solid. P2O5 तक सब solid, and the last SO2 and chlorine oxide are gas. For color, again the first three are white solid. Powder की form में जैसे होते हैं white powder, salt, table salt. Silicon dioxide is translucent, crystalline, थोड़ा transparent सा होता है. P2O5 is white and sulfur dioxide is colorless gas. These two are actually colorless. इसका color हमें नहीं चाहिए, mustard color है तो इसको मैं लिखूंगा मैंने colorless. Nature as in the oxide is like acidic, basic, amphoteric. तो ये तो आप लोगों को बताना चाहिए. Sodium और magnesium oxide की nature, could anyone try and tell me? Basic. Sir, basic. Metal oxides are supposed to be basic basic, metals, लेकिन जो aluminum oxide है, that is amphoteric. ठीक है ना, वो आपने याद रखना है. There is another oxide which is amphoteric. आपने IGCSE में पढ़ा था. So aluminum oxide के साथ another amphoteric. सिलिकॉन डाइऑक्साइड. Sir, boron. हाँ देखा ना, अब कितने आंसर आए. इनमें बेटा जिंक ऑक्साइड आपने याद रखना है बस. लिथियम ऑक्साइड तो बेसिक है. कार्बन पता नहीं किसी ने कुछ कहा था, वो तो एसिडिक है और न्यूट्रल है. जिंक ऑक्साइड इज द सेकंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. देयर आर अदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, लेकिन वो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको याद हो इवन ए लेवल में. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. Silicon dioxide, phosphorus and sulfur dioxide are acidic, but even chlorine oxide is acidic. All these are acidic. अच्छा, जो solubility है उसमें आप याद रखेंगे कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, they are insoluble in water. Basic oxides are soluble in water. Acidic oxides are soluble except silicon dioxide. ये वाला insoluble है because इसका structure giant covalent है. तो because of being giant covalent, it is insoluble. And the rest acidic oxides are soluble in water. And based on their solubility, we'll try and show the reactions in next class. Even like the soluble hoga water mein, it will make a base. The ones which are acidic and soluble in water will make an acid when you put them in water. So this table includes the physical properties of these oxides. और ये आपने याद करनी है. थोड़ा कॉन्सेप्ट हैं, कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड हैं नो डाउट, लेकिन they come in MCQs. I mean, it says an oxide of third period element X has these properties कि जी ये soluble है, amphoteric, acidic है, तो you get to pick which oxide could that be. तो अगर आपको ये इनका आइडिया नहीं हो प्रॉपर्टीज का, तो फिर you really cannot pick that sort of question or option there. तो we just left with 2 minutes. Next reactions oxides के वो भी मैंने स्टार्ट करा फिर. तो कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से है, आप पूछ लें. If you're noting it down, so maybe you can do that afterwards when I share the recording. I'll share it right now. अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, वहाँ से भी Sir, आप what लोग देख सकते हैं. जी. Sir, what does GC mean?
below insoluble in silicon dioxide. The giant covalent. ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा किसी का पूछे? चलें, that will be all then. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।